Welcome everyone to one more lecture of 10th standard English. Today we are going to do 4.2, that is luncheon. And luncheon, first of all, meaning is a light lunch. It's not basically a lunch, but it is a light meal. And it is a story, incident written by the writer is William Somerset Maugham, okay, and he was born on 1874 and passed away in 1965. Now this is a small incident, true incident happened with the writer himself, okay. So let's start the lesson. William Somerset Maugham, 1987 1965 he passed away, was a distinguished British playwright, novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. His work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan setting, and shrewd understanding of human nature. Now, Maugham was a distinguished British playwright. Now, distinguished means, as you know, distinguished means when you differ something from something else, so that is called distinguished. So he was that distinguished. So कुछ थोड़ा सा बाकी writers से थोड़ा सा हटके था. Okay, he was little bit different from the other writers. So he was a British playwright. The playwright, he used to write plays. Then he was novelist. The one who write novel is known as novelist, and he also wrote short stories. Then he was among the most popular writers of his era. During his generation, during his time, he was the most popular writer and reputed and highest paid author. Reputed means very respectful, very famous writer, and he was the highest paid author of his era, that is 1930s. His work is characterized by, now the main characteristic of his playwright novels, they were like, it was unadorned style. Means unadorned style means it is like straight, plain, simple. Okay, that stories, whatever he used to write, it was unadorned, means it was plain, simple and straight stories. Then cosmopolitan setting. Now cosmopolitan is a person who is visiting countries to countries. I have written over here, who is visiting many countries. That people or that person is called cosmopolitan. And a shrewd understanding of human nature. Now he was having certain qualities. Now shrewd means to understand or predict or judge someone very easily. The one who can understand the person, the one who can judge the person correctly, that is called shrewd. So he was having that shrewd understanding of human nature. Then next paragraph, a most delightful humorous narrative, The Luncheon, is a slice of life story about Maugham's luncheon date proposed to him by a woman who he hopes is a supporter of his art. So now the incident which we are going to do is a delightful. Delightful means very cheerful, very happy, little bit funny. Okay, little bit funny type of incident it is, which has happened with the writer himself. Humorous means funny, and that's why the name is luncheon, because it's based on a lunch date. Now it's a small incident of his life, and here a woman, a foodie woman, meets him, and what happens in that moment, in that time when they meet, it's all over given over here. Okay. Now there is a woman who used to follow him because he was a writer, so he had many followers. Among those followers, he had one woman. Now here the supporter of art means the one who is supporting your art, the one who is supporting you, that means your follower. So the story is based on that follower, and that follower is a woman, and that woman is very foodie. Now we are going to do with this incident that she meets him, and what happens when they meet is all over given over here. Now the first two paragraph is the present date when they meet, and then the story is in flashback. फिर वो flashback में चला जाता है, तो पूरा flashback की main story है, फिर वापस they come to present date. So we are going to do the present date. We'll start with the present date. Okay. I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. It was a long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized
her. She addressed me brightly. Now what happened? Now he is talking about the present day. एक दिन क्या होता है, जो राइटर और जो फूडी वुमन रहती है, they are somewhere in a play, in a theater somewhere. So that lady, she recognized him that this is a writer. Now what happened? But the writer did not recognize that woman, that he has met this woman 20 years ago. We'll do the story, you will come to understand later on. So what happens here? लोग थिएटर में रहते हैं, फिर जो लेडी है उसको देखते रहती है, बट वो जब लेडी को देखता है वो पहचान नहीं पाता. So he is saying that कि if someone who has not mentioned his name, her name, अगर कोई उस औरत का नाम नहीं लेता तो शायद वो राइटर उसको पहचान नहीं पाता, बिकॉज दे आर मीटिंग आफ्टर 20 years. ओके, सो वी आर डूइंग द प्रेजेंट डे. ओके, सो देन द राइटर रिकॉग्नाइज्ड हर कि हाँ हम लोग 20 साल पहले मिले थे. देन ही गोज अप ड्यूरिंग इंटरवल एंड सिट बिसाइड हर. ओके, देन वेल इट्स मेनी years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to lunch here. Now here the lady is starting the conversation like, and she is saying that it's been many years. 20 साल के बाद वो लोग मिलते हैं and she says how time flies. मतलब वक्त कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता. And we are none of us getting younger. हम लोग जैसे 20 साल हो गए, हम अभी तक जवान नहीं हैं, हम बूढ़े हो रहे. So then she asks, do you remember the first time we met? You asked me for a luncheon. Like that way she asks him. Then the writer, he recollects that did I remember. ये राइटर खुद से बोलता है अपने आप को कि क्या मुझे याद है. Now the actual story starts. Now he goes into the flashback. So let's go to the flashback. Paragraph 3. It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday, and would give her a little luncheon at Fire's afterwards. Fire, that is a restaurant, and I was so far beyond my means that I had never even thought of going there. I had 80 francs, gold franc, to last me the rest of month, and the modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. Now here the writer goes into the flashback and he says that it was 20 years ago when he was living in Paris. That time he was a struggling writer. वो उतना अच्छा राइटर नहीं बना था, वो स्ट्रगल कर रहा था. He was at the start of the writing profession, so he was not earning that much. वो सिर्फ खुद को अकेले को पाल सके उतना ही वो कमाता था. So he was having a small tiny apartment and he was earning barely enough. मतलब उतना ही कमाता था जितना उसको sufficient है. उसका जो earning था ज़्यादा नहीं था because he was not that famous writer that time. Okay. Then what happened once, the lady, she read his book and then she gave a review. Book पढ़ती है writer की और review देती है कि it is a nice book. जो भी story वगैरह रहती है, she says that it's a nice story. And the writer replies her thanking her. Then the lady again, she replied back to the writer and she says that she wants to meet the writer because she is passing by through Paris and she could meet on following Thursday. Thursday जो आएगा दूसरा वाला, उसमें तब वो मिल सकते हैं क्योंकि उसके पास उतना sufficient time नहीं है. Now writer is very kind because he is struggling and he wants the follower. जब कोई struggle करता है फिर उसकी followers रहते तो बहुत अच्छे से बात करते हैं सब celebrities वगैरह. तो जो writer है इसलिए भी बड़े kindly, बड़े gentle way से जो lady का था, जो भी followers थे उन सबको reply देता था. ठीक है, तो he gave the reply that okay, we are meeting somewhere in Paris. Now where he decides to meet in Fayette. Now Fayette is a very expensive restaurant in Paris and he says it is far beyond my means. इतना expensive है कि वो writer के हैसियत से, writer के औकात से बहुत ज़्यादा दूर है.
क्योंकि राइटर जो है बहुत कम कमाता है, तो वो वही बोलता है कि जो फायर जो रेस्टोरेंट है वो उसकी जो है अर्निंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो लेडी को कोई ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाना चाहता, तो वो ही इज़ लिटिल बट वेरी काइंड एंड ही वांट्स टू बी हैविंग दैट luncheon date very grand or something. Okay, then he starts off calculating the money. Now he is having 80 franc. Franc means euro of France and Belgium. यूरो अभी हुआ है 2003 या 2009 में, पहले उसको फ्रैंक बोला जाता था फ्रांस और बेल्जियम की करेंसी को. सो ही सेज दैट ही इज़ हैविंग 80 फ्रैंक, जो उसको पूरा एक मंथ तक उसका जो है पूरा एक्सपेंस जो है वो निकल जाता है, उसका पूरा घर का एक मंथ का खर्चा वो 80 फ्रैंक्स में निकल जाता है. बट जो फायर का जो एक्सपेंसिव बिल है इट इज़ फार बियॉन्ड दिस 80 फ्रैंक्स. सो ही थिंक दैट अगर मैं कॉफ़ी का जो बजट है, एक हफ्ता या 2 हफ्ता मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे, तो मैं ये 80 फ्रैंक से उसको अच्छा खासा लंच करा सकता हूँ. सो ही स्टार्ट्स टू कैलकुलेट द मनी, accumulate the money, he start to save the money. Okay, then next paragraph. I answered that I would meet my friend at Fires on Thursday and at 12:30. She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having both teeth white and large, and even then were necessary for any practical purpose. Now he answered her that he would meet her at Fire at 12:30. 12:30 means 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे वो लेडी को मिलने जाएगा. Then he meets that lady, and the appearance of lady is given over here is that she was imposing rather than attractive. राइटर को ऐसा लगा कि थोड़ी सी यंग रहेगी, थोड़ी सी अच्छी खासी लेडी लड़की टाइप रहेगी, बट the appearance given over here is that she was imposing. Imposing means grand और impressive, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह वाली थी वो, और थोड़ा सा एकदम लग रहा था कि आर्टिफिशियल वगैरह मेकअप वगैरह रहेगा. नॉट अकॉर्डिंग टू हर एज, रैदर देन एट्रैक्टिव. शी वॉज नॉट दैट एट्रैक्टिव, बट वो उसका जो अपीयरेंस था, मेकअप वगैरह जो आउटफिट रहेगा, उससे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही है. ओके, एंड शी gave him a smile, and the smile is having more teeth. जो उसकी स्माइल थी उसमें इसके बड़े बड़े दांत, वाइट जो बड़े बड़े दांत है वो दिखा रही थी. एंड इट वॉज नॉट दैट नेसेसरी टू गिव दैट बिग स्माइल. द राइटर सेज दैट इतना कुछ बड़ी स्माइल देने की ज़रूरत नहीं थी. सो ही इज डिस्क्राइबिंग द अपीयरेंस ऑफ दैट लेडी. देन नेक्स्ट पेज ही इज डिस्क्राइबिंग द लेडी दैट शी वॉज टॉकेटिव, बट सिंस शी सीम्ड टू want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. Now she was so talkative that she didn't give any chance to the writer to speak something. So writer thought to be quiet and listen to that lady only. Okay, so writer thought that मैं चुपचाप सुनने का काम करता हूँ, इसको बोलने देते, because she was that talkative. Okay, I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me. Now I was startled. I have written is shock. Now they went into the restaurant when you go, the waiter he brings the menu book. Okay, then when the menu book came, the writer was little bit shocked, little bit surprised. Okay, because he knew that the Fire is very expensive hotel, और जो भी वो जो dishes थे उनकी प्राइस भी वो बताएगा अभी. एंड द प्राइसेस पे हायर, जितना वो सोचा था उससे ज़्यादा उसका प्राइस था हर एक डिश का. एंड द लेडी एश्योर हिम दैट आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन. ये जो लेडी का जो फेमस सेंटेंस है, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, मैं लंच में कुछ ज़्यादा खाती नहीं, ये कॉमन सेंटेंस पूरे इनके लंच डेट में है. सो द लेडी इज गिविंग her sentence that I never eat anything for lunch. मैं ज़्यादा खाती नहीं, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल का. ओके, she means like that. Oh, don't say that, I answer generously. The writer says नहीं प्लीज़ ऐसा मत बोलो, शर्माओ मत, खाना है तो खा सकते हो. इसका मतलब ये है, don't say that, I answer generously. Now the writer has answered her generously. I have written meaning yes, readiness. Okay, जैसे लेडी ने बोला कि आई नेवर ईट एनीथिंग, मैं ज़्यादा कुछ खाती ही नहीं लंच में, तो राइटर बोलते हैं डोंट से, फटाक से राइटर ने बोल दिया कि डोंट से दैट. ओके, यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, बट राइटर को अंदर से डर था कि पता नहीं बिल कितने का आएगा. देन नेक्स्ट पैराग्राफ, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज.
A little fish perhaps. I wonder if they have any salmon. Now the lady is saying that I never eat more than one thing. मैं एक डिश के अलावा कुछ ज़्यादा खाते ही नहीं. पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं इतना सारा. एक छोटी सी फिश perhaps मतलब मे बी, एक छोटी सी फिश मे बी, अगर इनके पास सामन रहा, सामन यू विल कॉल इट एज सामन, ओके, एल इज साइलेंट. सो अगर इनके पास अगर सामन वो फिश रहेगी तो भी चलेगा. देन दिस इज the way the lady is saying to the writer. Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just came in. It was the first they had had. I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. No, she answered. I never ate more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. Now she demands for salmon. She says that अगर सामन रहेगा तो चल जाएगा. तो राइटर ही इज सेइंग दैट इट वो सीज़न नहीं था, सामन का वो सीज़न नहीं था. तो राइटर को लगा, राइटर थोड़ा खुश हो जाता है जैसे कि सामन का सीज़न नहीं है, चलो ये होटल में सामन नहीं रहेगा क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव डिश इन दिस फ्रांस एंड पेरिस. तो राइटर अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वेटर को पूछते हैं कि डू यू हैव एनी सामन. तो वेटर बोलता है येस, अभी एक नई सैमन आई है और वो फर्स्ट सैमन है, एक ही सैमन है ये जो हमारे पास आई है. तो आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट. तो वो ऑर्डर दे देता है वो लेडी के लिए. देन वेटर ही आस्क्स द लेडी कि सैमन को बनने के लिए अभी टाइम है, सैमन को पकने के लिए टाइम है, तब तक के लिए आपको कुछ चाहिए क्या. तो लेडी सेज नो, आई डोंट ईट एनीथिंग इन लंच unless you have a little caviar. Now caviar is an expensive dish made of eggs of a fish, then sturgeon. जो caviar it is a delicacy of Paris, France की फेमस डिश है और बहुत एक्सपेंसिव रहती है. तो क्या बोलती है, जब तक सामान बन के आता है तब तक मुझे caviar भी चल जाएगा. And you remember this that she says continuously, she is saying that I don't eat much in luncheon. मैं कुछ खाती नहीं luncheon, but she is ordering salmon also and she has given order of caviar also. So I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. For myself, I chose the cheapest dish of the menu, and that was a mutton chop. Abhi she ordered caviar, and by the time the salmon was cooking, then the writer knew that he cannot afford caviar because it is very expensive dish of this Paris and France. So he thought of, तो मना तो नहीं कर सकता कि तू मत ले, मेरे पास इतना पैसा नहीं है. He was so gentle that he agreed and everything that the lady he was ordering. So he says that कि मुझे तो कुछ भी चल जाएगा. So he orders the cheapest dish of the menu and that is mutton chop. वो खुद के लिए एकदम सस्ती वाली डिश और ऑर्डर करता है और वो रहता है मटन चॉप. Then the lady says, I think you are unwise to eat meat, she said. I don't believe in overloading my stomach. Now the lady is saying to the author, after looking that he has ordered mutton chop, she is saying to the author that I think you are unwise. तुमको खाने पीने का कुछ आइडिया नहीं है लगता है, तुम बहुत अनहेल्दी खाना खाते हो. I don't believe in overloading my stomach. मुझे अपने स्टमक को ज़्यादा लोड करना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता. Despite she has ordered 2 dishes, उसके बाद भी वो राइटर को बोलती है कि तुम कितना खाना खाते हो. She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music, but I wonder what the bill could come to. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. Now she ate the caviar also and she ate the salmon also. And she was talking gaily of art, means जो art था राइटर का, राइटिंग का जो भी आर्ट वगैरह रहेगा, she was talking about that. Continuously she was talking. Gaily means cheerful. In a happy way she was continuously talking about the writer's art, writer's story, writer's का जो लिखने का जो स्टाइल था वो उसके बारे में ही बात कर रही थी, लिटरेचर एंड म्यूजिक के बारे में. बट द राइटर he was still in his mind that पता नहीं बिल कितने का आएगा. So when the mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. जब मटन चॉप आ गया तो the lady gave him the look. Now quite seriously to task means blame. उसको blame करती है. वो क्या blame करती है? I see that you are in the habit of eating a heavy lunch and I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I could
possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. Now she blames the writer that after seeing the mutton chop, she says that you are having a very bad habit of eating this heavy meal. हमारे पास जो है बहुत गंदी आदत है इतना हैवी मील खाने का, जबकि वो मटन चॉप इट वाज द cheapest and the lightest dish in that menu. And she says that you should follow me, मतलब तुमको मुझे देखना चाहिए, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, जबकि उसने सालमन और कावियर दोनों खा लिया था. उसके बाद वो बोलती है कि मुझे एस्पैरागस भी चाहिए, एस्पैरागस इज ऑल्सो फूड. एंड शी सेज दैट अगर मैं पेरिस में एस्पैरागस नहीं खाऊंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि पेरिस का वो फेमस है. तो शी सेज दैट इफ़ आई लीव पेरिस विदाउट हैविंग एस्पैरागस आई वुड बी वेरी सॉरी फॉर माई सेल्फ. मुझे बहुत पछतावा होगा, मुझे बहुत रिग्रेट होगा अगर मैं यहाँ से एस्पैरागस खा के नहीं गई तो. देन माई हार्ट सैंक. आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वेर horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. Now, after saying this कि उसको एस्पैरागस भी खाना है, तो राइटर तो उधर ही थोड़ा सा हार्ट फेल जैसा उसको होने लग गया, बिकॉज ऑलरेडी सालमन और कावियर का बिल इतना हो गया था. देन ही सेज दैट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फूड इन द पेरिस. एस्पैरागस जो है बहुत एक्सपेंसिव है. एंड जब भी राइटर ने कहीं शॉप में देखा है तो उसके मुंह में भी पानी आया था, लेकिन उसने लिया नहीं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है और राइटर के पास इतने पैसे नहीं रहते थे. Then what happened next? I'm not in the least hungry, my guest sighed, but if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Then this lady says that I'm not in the least hungry. मुझे इतनी भूख नहीं लगी, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि asparagus मुझे खाना चाहिए तो ठीक है, ऑर्डर कर लेते हैं, asparagus भी मैं खा लूँगी. So she is ordering by herself only. Aren't you going to have any? Then she says to that author that तुमको नहीं खाना है क्या कुछ? तो राइटर सेज दैट नो आई नेवर ईट एस्पैरागस. द राइटर सेज दैट नहीं, मैं कभी एस्पैरागस नहीं खाता. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. वी वेटेड फॉर एस्पैरागस टू बी कुक्ड. Panic seized me. It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been paid. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. Now she has ordered caviar also, she has eaten salmon also, and then she is ordering asparagus also. So by the time the asparagus was cooking, the writer was in panic कि पता नहीं बिल कितने का आएगा, because he was having only 80 francs and he thought that बिल अगर ज़्यादा आया तो क्या करेगा, वो पॉकेट में हाथ डालेगा और बोलेगा कि मेरा जो है वॉलेट है वो गुम हो गया. एंड देन तो वो बहुत चीप लगेगा लेडी के सामने अगर वो ऐसा एक्सक्यूज देगा कि इसका वॉलेट गुम हो गया. देन ही थिंक्स दैट अगर मैं लेडी से बोरो करता हूँ मनी तो वो भी बहुत अजीब लगेगा, बिकॉज शी इज़ दी गेस्ट ऑफ दिस राइटर. सो ही सेज दैट फाइनली कम्स टू कंक्लूजन दैट अगर पैसा कम पड़ा तो वो अपनी घड़ी होटल में रखेगा और फिर वो होटल वाले को बोलेगा कि जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो पैसा पे करके वो घड़ी वापस रिटर्न ले लूँगा अपनी. सो ही इज़ thinking like that about the money and the bill. The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in a large mouthfuls. At last she finished. फिर एस्पैरागस आ गया तो जो लेडी रहती है पूरा मुंह में भर के लेती है और राइटर उसको देखता रहता है कि पूरा मुंह से उसके गले से कैसे वो अंदर जा रहा है. एंड एट लास्ट शी फिनिश्ड द एस्पैरागस. देन अब इतना सब खा लिया उसने लेडी ने, तो राइटर पूछता है coffee? I said. Writer said coffee. तो she said yes, just an ice cream and coffee. Now writer ने अभी सिर्फ एक ही पूछा coffee, but additional to this the lady says एक ice cream भी चाहिए उसको. She answered. I was past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. Now अभी lady ने coffee और ice cream भी order कर दिया. writer तो एकदम ऐसा हो गया कि चलो अब जो भी आएगा चलेगा. आई पास्ट कैरिंग नाउ. अभी राइटर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना भी बिल है, बिकॉज ही नो दैट अभी बिल तो 80 फ्रैंक के ऊपर गया ही रहेगा, तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता
ही हैज़ ऑप्शन ऑफ दैट वॉच कि वो वॉच दे देगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो वो होटल में पैसा पे करेगा और वो वॉच अपनी ले लेगा. सो केयरलेसली ही ऑर्डर्ड दैट कॉफ़ी फॉर हिमसेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर दैट लेडी. नाउ नेक्स्ट, you know there's one thing I thoroughly believe in, she said, and she ate the ice cream. One should always get up from the meal feeling one could eat a little more. Now she says to the writer that ice cream खाते खाते वो राइटर को बोलती है कि I believe in one thing, एक चीज़ पे वो बिलीव करती है, and that is one should always get up from a meal feeling one could eat a little more. एक इंसान को अपने खाने से तभी उठना चाहिए जब उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह है. तो लेडी ऐसे उसको बोलती है कि जब तक तुमको ऐसा नहीं लगे कि अभी भी मेरे पेट में जगह है तब तक तुमको उठना नहीं चाहिए अपने खाने से. सो राइटर आस्क्ड, आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली. अभी राइटर ही इज आस्किंग क्या अभी भी तुमको भूख लगेगी. She has eaten salmon, she has eaten caviar, she has eaten asparagus, then she has eaten ice cream and coffee also. So the writer asked faintly means slightly, एकदम सांस ऐसे करके, अभी भी तुमको भूख लगी है. तो she says, oh no, I am not hungry. You see, I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for luncheon. I was स्पीकिंग फॉर यू. तो वो बोलती नहीं मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं तो सिर्फ दिन में एक कॉफ़ी पीती हूँ, लंचन में तो कुछ खाती ही नहीं. जबकि उसने इतना कुछ खा लिया था. उसके बाद वो बोलती है लंचन में मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, मैं तो आपके बारे में बोल रही थी कि यू शुड ईट समथिंग. तो राइटर ही सेज, ओ आई सी. देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी. द हेड waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew a little later, for my guest, going on with her conversation, absent-mindedly took one. Now writer says, अच्छा. Then एक और टेरिबल चीज़ होती है वहाँ से, जो वेटर रहता है, he was passing by the lady and he is carrying a basket of peaches. So the lady पीचेस का जो बास्केट है वो राइटर लेके ये वेटर लेके जाता है वहाँ से. एंड राइटर इज थिंकिंग कि अभी तो पीचेस का सीज़न नहीं है, और जब कोई फ्रूट का सीज़न नहीं रहता है और फिर भी फ्रूट मिलता है तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो राइटर को यही लगता है कि अभी पीच का सीज़न नहीं है तो अभी कितना एक्सपेंसिव रहेगा ये पीचेस. तो देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, I knew a little later, for my guest going on with her conversation, absent-mindedly took one, and then while they were talking, she picked up one peach from that basket. You see, you have filled your stomach with a lot of milk, my one miserable little chop, and you can't eat any more. But I have just had a snack, and I should enjoy a peach. Now she is saying to the writer that तुमने मटन चॉप खा के अपना पेट पूरा भर लिया, because मटन चॉप is very heavy. लेडी उसको ऐसे बोलती है राइटर को, बट मटन चॉप वॉज नॉट हैवी. द राइटर इज सेइंग टू हिमसेल्फ दैट माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप. राइटर ऐसा बोलते कि छोटे से मटन चॉप से मेरा पेट क्या भरेगा, वो तो सस्ता था इसलिए उसने ऑर्डर किया. तो लेडी शी इज आंसरिंग टू हिम दैट कि यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद द मटन चॉप. तुम्हारा तो पेट भर ही गया होगा मटन चॉप से, बट मैंने तो बस स्नैक्स ही खाया है. सालमन, कावियर, एस्पैरेगस, कॉफ़ी, आइसक्रीम, अब पीच. ये पीच ये सब कुछ 5 से 6 आइटम खाने के बाद वो बोलती है कि मेरा तो पेट सिर्फ स्नैक में ही है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, तो आई शुड हैव अ पीच. द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप. हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 franc I left for the waiter, and I knew that she taught me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. Finally, she ate that peach also, and then the bill came. And when the bill came, it was a bill where a writer could save only 3 franc. जो उसके पास 80 franc थे, उसमें से जो राइटर के पास बचा वो था सिर्फ 3 franc. तो राइटर thought to give a tip to the waiter. When he gave the tip to the waiter, that 3 franc जो भी बचा कुचा था, तो वेटर को टिप दिया, तो लेडी ही गेव हिम अ लुक थिंकिंग दैट कितना चीप है ये राइटर, सिर्फ 3 franc वेटर की टिप तो नहीं होती. तो दिस वे द लेडी सॉ दैट राइटर.
एंड देन राइटर सेज दैट अब उसके पास पूरे महीने का खर्चा करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा, जो भी था उसने सब दे दिया बिल के साथ और टिप के साथ. Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. Then while going, the lady says, follow my example. मुझे follow करो, मुझे देखो, मैं कुछ खाती ही नहीं luncheon में. Like that way, she says, and they shake their hands. I'll do better than that. I retorted. I'll eat nothing for dinner tonight. Now the writer says, retorted means I have written, not written. Oh, it's already given in your book. Retorted means replied quickly with anger. When someone says to you something and you feel anger, तो जो quick reply आता है उसको बोलते हैं retorted. तो when the lady says कि follow me, मुझे देखो, मुझे मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ लंचन में, जबकि उसने 5 से 6 डिशेस खा लिए थे, तब वो बोलती है कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं. तो राइटर को गुस्सा आता है, वो बोलता है मैं इससे भी और अच्छी चीज़ करूँगा, मैं डिनर में ही कुछ नहीं खाऊंगा. तो राइटर सेज लाइक दिस, humorist, she cried gaily, jumping into a cab, you are quite humorous. When writer says that कि तुम तो बोलती हो कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं, अब मैं डिनर में ही कुछ नहीं खाऊंगा. तो this way when the writer gives her reply, she says humorist. Humorist means funny. You are very funny. And this way she goes into the cab. But I have had my revenge at last. I do not believe that I am vindictive man, but when the god take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stone. Now finally the last paragraph is here the present one. Okay, ये यहाँ पे you are quite humorous, यहाँ तक ये flashback था. अब ये last paragraph flashback से वो वापस आ गया वो present day पे, और वो बोलता है अपने आप को कि मैंने उस टाइम रिवेंज नहीं लिया था, क्योंकि वो रिवेंज लेने के लायक भी नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई पैसा भी नहीं बचा था, तो क्या रिवेंज लेता लेडी से. तो वो बोलते हैं कि आई एम नॉट दैट रिवेंजफुल मैन. विंडिक्टिव मीन्स रिवेंज. ओके, रिवेंजफुल. तो बोलता है मैं तो उस टाइम पे उतना रिवेंजफुल था नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं क्या रिवेंज लेता इससे. तो ही सेज दैट जो भी था उसने ऊपर भगवान पे छोड़ दिया था. भगवान ने वो मैटर देखा, तो भगवान अपनी तरफ से जो है मेरा बदला लिया, और वो बदला क्या था, शी हैज़ वेट और 21 stone, मतलब she has gained a lot of weight which is like obesity, and 21 stone means 1 stone means a unit of weight equal to 14 pounds. तो 21 stone मतलब 14 pounds को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा that is equal to something 300 pounds के आसपास वो लेडी का वेट हो गया था, and that is very bad for health. सो राइटर उधर खुश हो जाता है उसको देख के कि वो इतनी मोटी हो गई है, इतनी ओबेस हो गई है. तब तो वो बदला नहीं लिया 20 साल पहले, क्योंकि उसके लायक नहीं था, बदले के लायक नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे. तो क्या बदला लेता और किस लायक से वो बदला लेता. सो आफ्टर सीइंग द लेडी विद दैट ओबेस एंड फैटीनेस, राइटर बिकम्स हैप्पी कि इसको इतना मोटापा वाला बीमारी हो गया. तो हियर इज द स्टोरी इज एंडिंग. सो दिस इज वेरी फनी स्टोरी. And here where a foodie lady, he meets the writer who is very shy and very kind towards his followers, so he accepts the lady's demand and he date her for a luncheon. And then the lady has one common sentence that मैं तो कुछ खाती ही नहीं, ये बोल के वो पूरी 6-7 डिशेस खा लेती है. फिर राइटर को ऐसा डर भी लगता है इसका बिल कितना आएगा. राइटर बिल भी पे करता है, टिप भी पे करता है, और फिर राइटर को गुस्सा भी आता है कि कहाँ से इसको भुला लिया मैंने, मना भी नहीं कर सकता राइटर. तो this is the story of a writer and the foodie lady. I hope you understood this funny story. Till that time, take care. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much and bye.